Today is 10th September and this is the oral test of Polity Bare Act. All right. List the, speak out the preamble. Who can tell? Entire preamble I want. Azmi. Sir, we the people of India solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, uh, imbibing justice, No, social. completed. Republic के बाद क्या आएगा? Who can continue? Lakshmi. And to secure to all of its To citizens all its justice, citizens. social थोड़ा सा justice. फीलिंग से पढ़ो लक्ष्मी उसको. Don't read it like very in Yes, a sir. dispassionate way. वो याद नहीं रहेगा नहीं तो. हाँ. Justice, social, economic, and So political. what kind of justice are mentioned? Social, economic, political. ये याद होना चाहिए. Okay. Next. Skand, continue. I think equality of status and no, I think there was a one before. बीच में क्या था? आदर्श बोलेगा. Liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Yes, 5 liberties are mentioned: thought, expression, belief, faith, and worship. Equality अर्पिता, of आगे चलो. सर आई थिंक इसके बाद सर इक्वालिटी. इक्वालिटी हाँ, बोलो आगे. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस लक्ष्मी. Equality of status and of opportunity. Yes, And two equalities. Okay, just stop. Equality of status and of opportunity. 2 equalities are mentioned. आगे continue, Prasun. And to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and the integrity of. Ensuring नहीं है. Assuring minor चीज है ये, लेकिन ensure word नहीं है preamble में. Assuring the, आगे बोलो. Assuring the dignity of the individual and the integrity of the nation. Unity and integrity of the nation. Okay, so there is no word, there is no family word in the preamble. ऐसे बोल देगा assuring the dignity of the individual and the family or her family or something like that. There is no family word, it's only individual. Okay, and the unity and integrity of the nation. Okay, last line कौन बोलेगा? Who can tell? In our constituent assembly wali line, who can tell? Skand. In our constituent assembly on this day, 26 November 1949, we hereby adopt, enact, and give ourselves this constitution. What was added by the 42nd Amendment Act of 1976? Adarsh. So socialist, secular, and integrity. Okay, socialist, secular, and integrity. In case we are going unity and integrity, it's not. सर इंटेग्रिटी ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट किया था. यस सर. ठीक है. यूनिटी पहले से था, इंटेग्रिटी ऐड. ठीक है. ये चेंजेस याद होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ. बिकॉज आई हैव नॉट सीन योर लक्ष्मीकांत और एनी अदर थिंग. मैं जस्ट इसके जो सब नोट्स हैं नीचे बस वो देख के बोल रहा हूँ. तो यू पीपल डू द फैक्ट चेक इन केस एनीबडी सेज द रॉन्ग थिंग. ओके, नहीं तो वो गलत चीज याद रह जाएगी फिर. तो इसीलिए ये जो पढ़ के आ रहे हो ये लक्ष्मीकांत से भी साथ साथ पढ़ना है ये पेजेस जो भी हम इधर कर रहे हैं टेस्ट में. ओके ओके, टेल मी द list of the liberties mentioned in the preamble. Prasun. Liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Okay, tell me the justice mentioned. Lakshmi. Social, economic, and political. Social, economic, and political. Tell me the equalities mentioned. Adarsh. Status and opportunity. Okay, tell me the exact sequence of socialist socialist democratic वाला जो point है ऊपर first line में. Diksha.
एग्जैक्ट सीक्वेंस बोलो वर्ड्स का। Sir, sovereign, socialist, secular, democratic republic. यस ओके, तो इसको एक एक्रोनिम इसका बन जाएगा SSSDR, SSSDR। ठीक है, बस यही है प्रेम्बल में। What is the first article about? What is the first article about, Azmi? Sir, Article 1, Clause 1, India, that is Bharat, shall be the union of states. Shall be a union of states. So India is also mentioned, Bharat also is mentioned. Okay, Hindustan is not mentioned, at least in this article it's not mentioned. It may be mentioned Hindustan, Hindustani, इस type के words का ध्यान रखना है। क्या mention हो रहा है, क्या नहीं mention हो रहा है, पूछता है क्या define हो रहा है, क्या नहीं define हो रहा है, क्या exhaustively listed है, क्या नहीं है, ये सब चीजें पूछता है वो। ठीक है, तो that is the purpose of seeing the structure of the constitution. Okay, so union of states बोला हुआ है। What is the significance of the first schedule? Prasoon? So the names of states and their territories are mentioned in the first schedule. States and their territories, union territories. Okay, and the union territories are listed. What is the significance of the 7th Amendment Act 1956 in this context? Azmi? Sir, Sikkim earlier was protectorate state, associated state, but then ये मैटर नहीं करेगा एसोसिएटेड है कि नहीं, बस इतना भी याद रहेगा कि सिक्किम का सा कुछ था, तो बस उतना ही बहुत है। ओके, फर्स्ट शेड्यूल में ठीक है स्टेट्स एंड यूटीज हैं, देख भी लेना एक बार फर्स्ट शेड्यूल दिखता कैसा है, जो भी शेड्यूल मेंशन है वो जाके देखना भी है एक बार, ठीक है ना, इन व्हाट वे इज इट, डज इट लुक ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज द स्टेट टू acquire new territories, true or false? The constitution of India allows the state to acquire new territories. Why is it false, Sana? So by state, are we referring to the The state of sub-national India, the states? state of India. Then it's fine, then it's alright. When I say state, it is the state. I said the state, I didn't say a state. What you are referring to is a state or states. When I say the state, it means that one, the state of India. So it is explicitly mentioned, the constitution explicitly allows to acquire territory. Okay, अगर ऐसे बोल देगा explicitly allows to capture territory, फिर explicitly allows to capture territory. So are we equating acquiring with capturing? देखो मेरे हिसाब से तो कैप्चर एक्सप्लिसिटली तो नहीं कर रहा है, एक्सप्लिसिटली अक्वायर तो ठीक है, वही वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन एक्सप्लिसिटली कैप्चर कर रहा है, कैप्चर तो नहीं बोल रहा है। सर थोड़ा नेगेटिव टोन हो जाएगा ना, टोन नेगेटिव है उसका, ठीक है ना, तो फिर भी कोई देख लेना, अगर कोई टेस्ट में, मॉक टेस्ट में किसी इंस्टीट्यूट में कुछ पीडीएफ वगैरह मिले उसमें सर्च मार के देख लेना, पीवाईक्यूज में देख लेना, कहीं अगर रेफरेंस हो, यू कैन जस्ट कीप दिस एज अ माइनर डाउट, कहीं से भी कुछ भी रेफरेंस मिल जाए उसका हेल्प है, बट आई डोंट थिंक कैप्चर वुड बी ट्रू। ओके, द पार्लियामेंट इज द sole authority to establish new states or admit territories into the Union of India. True or false? Yes. The establishment of new states happens on the terms which are accepted by the affected states. The establishment of new states or a state can happen on the acceptance of terms by the affected states. False. It is the sole prerogative of the parliament. It says parliament on such terms and conditions as it thinks fit. बात खत्म,
किसी का कुछ नहीं सुनना है, ठीक है? Okay, what all powers does the parliament have with regards to formation or alteration of state areas? Azmi? Sir, increase the area, decrease the area, changing the name, In the name, one more thing. boundary. Boundary, changing the boundary. Okay. ठीक है, one last point is there. अब वो पॉइंट हम नेक्स्ट पेज में कल कवर कर लेंगे, ठीक है? वो बिल जो है उसका क्या कंडीशन होता है, ठीक है? सो दैट्स ऑल इन टुडेज पॉलिटी टेस्ट.